Welcome back everyone. So last class we have seen sex determination in human, right? So that sex determination in men we have discussed. We are discussing sex determination, right? So the sex of the offspring is determined by the gametes produced by the parents we have seen. So we represent in the form of a letter X, X in case of female, XY in case of male. While in case of cockroach and grasshopper, we represent in the form of a capital letter X, X female, XO in case of male. And while crossing, we find that in a Punnett square, 50% probability will be the male, 50% will be female. We have seen. So continuing our classes, so we will move to our next sex determination, next part. So last class we have seen male heterogamity, right? Male heterogamity means in male we find two different chromosomes at the chromosome number 23. Now in this class we will see female heterogamity. Female heterogamity. Heterogamete means what? Two different chromosomes. Okay, so last class we have seen male heterogamety. Now today we will see female heterogamety. So in female heterogamety, in case of female chromosome at number 23, there will be two different chromosomes. If there is a change in chromosome in female, then all the male chromosome will be same chromosome. If there is a change in male, all female chromosome is same. We have already discussed. So female heterogamety we will classify into two. Now in case of man and like grasshopper or cockroaches, we represent in the form of a letter X and Y, right? And XO. But in case of a female heterogamety, we do not represent the same letter. We represent with different letter. Z. We represent letter Z and ZW. ZZ and ZW. Okay. So we are discussing female heterogamety. That means in female, two different chromosomes are different at chromosome number 23, right? So here there is two different chromosomes, Z and W. This will be our male chromosome, Z and Z. If there is a change in female chromosome, all male will be the same chromosome, will have the same chromosome. Okay. So ZW, these letters indicate that is our female. ZZ, that is our male. We do not represent with the same letter. Okay, we do not represent with the same letter. So this is one type. The other type, ZZ and ZO. ZZ and ZO. Okay, so same gamete, homogamete, what we call. If there is a same gamete, there will be our male. That why it is male? Because we are discussing female heterogamete. In female, there is a change in chromosome. So here we have ZO. This is our female. Okay. So where we find this kind of heterogamete? Where we find? Example we need to remember. See ZZ and ZW. Where we find such type of chromosome, we find such type of heterogamete. Female heterogamete in case of fowls, few fishes, butterflies and birds. So in such animal, their chromosome contain ZZ male, ZW female. The changes where we find in which number, the changes will always be at the chromosome number 23. Changes मतलब दो अलग क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है? कहाँ? 23 नंबर वाला क्रोमोसोम में हम लोग का 23 पेयरिंग होते हैं. फिर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? टुवर्ड्स एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक फिर से एक्सप्लेन करेंगे वो.
सो 23 नंबर वाला क्रोमोसोम में 2 अलग क्रोमोसोम रहते हैं, मेल में भी रहते हैं, फीमेल में भी रहते हैं. पहले तो मेल का देख लिया हम लोग चेंजेस, देन वी आर सीइंग नाउ इन केस ऑफ फीमेल. So when we cross this, when we make a cross in Punnett square, same result we will get. Z Z Z W. Okay. So 50% probability मेल होने का चांसेस है, 50% probability woman होने का चांसेस है. So male 50%, woman 50%. Okay, and it depends, and it will depend the gamete produced by here. It will depend the gamete produced by female. While in case of human, the sex of the offspring determines the gametes produced by males. लेकिन यहाँ में फॉल्स में, फ्यू फिशेस, बटरफ्लाइज और बर्ड्स में क्या होगा, उसका जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो डिटरमाइन कौन करेंगे, जो गेमेट प्रोड्यूस करेगा बाय फीमेल वही डिटरमाइन करेगा. अगर फीमेल W प्रोड्यूस करते हैं गेमेट, अगर वो W प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, सब फीमेल रहेंगे. अगर वो Z गेमेट्स देते हैं फ्यूजन का टाइमिंग में तो उसका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, सब मेल होंगे. ठीक है. सो दिस आर द थिंग दैट वी फाइंड. If you don't pay attention, if you are not sincere, गया, कुछ भी समझ में नहीं है. Please be sincere, be honest to yourself. Okay, वीडियो को देखो अच्छा से. Now such type of female heterogamete we find in case of, examples are important. Few butterflies and moth. Do you know what is moth? M-O-T-H. What is the differences between butterflies and moths? Both looks like same. The only differences is the size of moths are bigger as compared to butterfly. Moth का size butterfly से थोड़ा बड़ा होते हैं और color भी black होते हैं. Color butterfly are like colorful, beautiful, right? But the moths are dark in color and they are bigger in size. Okay. So in such cases we find this type of female heterogamete. So we represent in the form of a letter Z, Z and ZO. Then we find, yeah, above the remote. We also find in case of pigeon, ducks. So these are the few examples of female heterogamete in case of ZZ and ZO. Again, if you make a cross in Punnett square, so पहले ऊपर में मेल को लिखते हैं, नीचे फीमेल. So when we make a cross, Z Z Z Z Z, O को मैं बाद में लिख रहा हूँ. Okay, it doesn't matter. You can write O Z also. We can also write Z O. But to look good, to look it beautiful, so I am writing ZO. So in this case, what happened, in case of female heterogamete, the sex of the offspring is determined by the gametes produced by the female. While in case of male heterogamety, the sex of the offspring is determined by the gametes produced by man. Okay, I hope you all understood. So if question asks, describe the process of sex determination. So you need to write first male heterogamety, we have discussed, then female heterogamety along with example. Okay, so entrance point of view important होते हैं, ये सब आते हैं entrance में. Okay, entrance में. So अच्छा से पढ़ाई करो. If you don't understand anything, please ask in a comment section. I will give you. I'll explain it. That, or you can call me. Okay, you can text me if you don't understand. But please be sincere. Be sincere. I want you to be disciplined and sincerity. I want sincerity in you. Now we cannot see each other. If you want something, if you want really something, you have to study by your own now. But we will provide everything that you need in here. Right? You just have to sit in your home, sit in your table, just do your responsibility. Okay? If you want something,
it's everything depends on you. If you do well, if you study well, if you follow our instruction, definitely you will have a good result. If you don't follow our instruction, if you just roam here and there because of this lockdown, if you just watch your phone for some extra stuff, if you watch movies and all, not watching our videos, then you will not understand. Okay? ऐसा मत सोचना कि बाद में जाके पढ़ूंगा, ऐसा मत करो. So continue करते जाओ. Be in track में रहो. Okay? So male heterogamity we have discussed. Female heterogamity we have discussed. Again, I'll come back to male heterogamity. Okay? उसमें से question पूछते हैं. But now let's start. Let's discuss some important parts. So we have seen male heterogamity, female heterogamity. Now we will see some interesting fact that apart from this, we also find some interesting fact in case of Drosophila. देखो अगर क्वेश्चन पूछते हैं describe the process of sex determination, just write male heterogamity and female heterogamity. ठीक है, हो गया. लेकिन अभी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे. Some interesting facts. So apart from male and female heterogamity, we also find some interesting facts in case of Drosophila. In Drosophila, melanogaster. So in case of Drosophila, so Drosophila में XXXY वो देखे हैं हम लोग already. लेकिन apart from that, we also find that in case of Drosophila, the sex of their offspring also determined by the ratio between autosomal chromosome and sex-linked chromosome. We have already seen autosomal and sex-linked, right? ऑटोजोमल किसको बोलते हैं, सेक्स लिंक क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट फिर भी वी विल अगेन डिस्कस बिकॉज द डिफरेंसेस आते हैं एग्जाम में. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट दिस. सो ड्रोसोफिला में अपार्ट फ्रॉम दैट मेल हेटेरोगेमिटी, द रेशियो भी डिटरमाइन करते हैं. ऑटोजोमल रेशियो और सेक्स लिंक रेशियो का भी देख के उसका ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. सो अगर इन फर्स्ट केस सेक्स लिंक रेशियो एंड ऑटोसोमल रेशियो का वैल्यू 0.5 होते हैं. ओके. सेक्स लिंक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लिंक. ओके. सेक्स लिंक को हम लोग एक्स लिंक भी बोल सकते हैं. ठीक है. वी हैव सीन दैट ऑलरेडी. सो इन केस ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं. इफ द रेशियो ऑफ सेक्स लिंक्स एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम, if the ratio of sex chromosome and autosomal chromosome is 0.5, then the offspring will be male. Okay, if the ratio between sex link and autosomal chromosome is 0.5, then their offspring will be male. If the ratio between sex chromosome and autosomal chromosome is 1, then their offspring will be female offspring. So in case of Drosophila, the sexes of offspring can be also determined by the ratio between sex link and autosomal chromosome. Sex chromosome and autosomal chromosome वैल्यू को याद रखना है. अगर sex chromosome और and autosomal chromosome का वैल्यू 0.5 होते तो their offspring will be male, सब मेल. अगर उसका रेशियो 1 होते तो देयर ऑफस्प्रिंग विल बी फीमेल होते. ठीक है. देयर इज वन मोर. अगर सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम का रेशियो 0.5 to 1 होते हैं, देन देयर ऑफस्प्रिंग विल बी gynandromorphs. Gynandromorphs means half male half female body होते हैं. ओके. 50% मेल 50% फीमेल होते हैं. ओके. सो वी कॉल इट एज ए gynandromorph. सी ये जो ड्रोसोफिला है ना, फ्रूट फ्लाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स. इसमें बहुत बायोलॉजिकल स्टडी किए जाते हैं. ओके. फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला में. और एक है कोइनोरेप्टाइटिस एलिगेंस प्रोटोजोआन, उसमें बहुत रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग, वो दो एनिमल्स में, वो दो इंसेक्ट्स में. सो
जब भी अगर बायोलॉजिकल वर्क करते हैं हम लोग, रिसर्च करते हैं, कभी हमेशा ये दोनों के पर ही करते हैं, ड्रोसोफिला और मेला क्या बोला कोइनोरप्टिस एलेगans. So this extra thing. So remembering part is this: if the ratio between the sex chromosome and autosomal chromosome is 0.5, then the offspring will be male. If the ratio is 1, the offspring will be female. If the ratio is between 0.5 to 1, the offspring will be gynandromorph. Gynandromorph means the offspring, the body will be half male, half female. Okay, half part will be male, half part will be female. Human में भी होते हैं, right? और है अगर रेशियो लेस देन, अगर सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम का रेशियो लेस देन 0.5 होते हैं, 0.5 से कम होते हैं, तो देयर ऑफस्प्रिंग विल बी मेटामेल्स. मेटामेल्स मतलब super males we can call, like Superman. Okay, मर्दांगी. So we can call it as Superman. Men से भी और ज़्यादा men. Superman, super males. Now, if the ratio of sex chromosome and autosomal chromosome is less than 1, their offspring will be meta females or super females. Okay, these things you need to remember. This is an interesting fact in case of Drosophila. ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, आ भी सकते, who knows. अगर आ गया तो ब्लेम करोगे मुझे, सौरभ ने तो पढ़ाया ही नहीं. लेकिन मैं पढ़ाने से भी तुम लोग पढ़ते ही नहीं, अभी तो और भी चांसेस मिल गया. See what you need to do, just sit in your home, आराम से टेबल में बैठो, बेड में बैठो, चाय पी के पढ़ो, कॉफ़ी पी के पढ़ो. We cannot see you, but at least पढ़ाई करो, ठीक है. हम लोग को आना पड़ता है लॉकडाउन में, कोविड-19 में, देखो बाहर में सब वायरस फैला हुआ है, फिर भी रूम से आना पड़ता है, तुम लोग को पढ़ाते हैं. Now if you can't do that thing, we are doing it for you, not for ourselves. We are doing it for you. I want you to do well, okay? So be sincere, be honest, be disciplined. So just study. एग्जाम्स में देखे कोई तो सब कॉपी करके किताब से दिया है, नेट से देख के दिया है, सब गाली खाएगा. रुको एक दिन, I will make that video one day. Immortal organism, how can you read jellyfish? Even if it is correct, did we discuss jellyfish? गाली खाएगा, जो लिखा है गाली खाएगा. So later, so these are the things that you need to remember in case of Drosophila melanogaster. Write it down in your note copy. When the classes gets open, I will check each and every one of your copy. I will check. If there is no note, I will let you out. Sex determination we are discussing. So we have discussed in case of Drosophila some interesting fact that we find. Okay. Next, what we need to know. Some interesting fact again we are discussing. See, we have seen in case of Drosophila. Now, in some animals, okay, कोई animals होते हैं जो temperature भी depend करते हैं. Temperature depend करके उसका sex determine करते हैं, ठीक है. कोई animals होते हैं अगर high temperature में वो लोग fertilization करते हैं, their offspring can produce either male or female. Okay. Low temperature में अगर fertilization करते हैं, their offspring produce मेल होगा कि फीमेल होगा. It can be determined depending on their temperature also. In case of some animal, like for example, crocodile. यहाँ पे क्या होता है, temperature depend करते हैं. In case in such animal, temperature also determines the sex of their offspring. Have you ever seen crocodile in your life? So crocodile is known as what? King of a river, right? King of water. So in crocodile, what happened? If they fertilize in high temperature, अगर high temperature में वो लोग fertilization करते हैं,
their offspring will be crocodile, king of river or king of water, high temperature. क्या होगा उसका offspring? Male. Their all offspring will be male. अगर वो लोग high temperature में fertilization करते हैं तो all crocodile offspring will be male. ये male produce करते हैं. Interesting fact पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये सब किताबों में नहीं है, but you should know. If they fertilize in low temperature, the offspring will be female, all female. सब उसका offspring female होंगे. कब? जब लो टेम्परेचर में फर्टिलाइजेशन करेंगे वो क्रोकोडाइल, ठीक है? ऑफ कोर्स लड़का लोग का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होते हैं, कॉमन सेंस यूज़ करो, ज़्यादा हाई टेम्परेचर मैन, लो टेम्परेचर वोमेन. सो नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक टॉर्टोइस. लेकिन टॉर्टोइस में उल्टा होते हैं, हाँ, जस्ट लाइक यू, नॉट all, of course, some of you. So tortoise, if they fertilize under high temperature, but don't think that slow and steady wins the race nowadays. You have to go very fast. ये कहानी पुराना है, अभी अप्लाई नहीं होता है आजकल ज़माने में. हाई टेम्परेचर में अगर फर्टिलाइज करते हैं tortoise, all their offspring will be female. tortoise में क्या होता है? फीमेल होते हैं अगर वो लोग हाई टेम्परेचर में फर्टिलाइजेशन करते हैं. अगर लो टेम्परेचर में फर्टिलाइजेशन करते हैं तब वो लोग उसका ऑफस्प्रिंग मेल होते हैं, मेल. सो दिस आर द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके. वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट. इतना मज़ा आता है इसको पढ़ने में, तो पढ़ने में कितना मज़ा आएगा. सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स विद द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द पेरेंट्स, ओके, इधर मेल और फीमेल. जो उसका ऑफस्प्रिंग होंगे, ऑफस्प्रिंग मतलब जेनरेशन, इतना तो पता होंगे. तो ऑफस्प्रिंग जो उसका ऑफस्प्रिंग होंगे वो डिटरमाइन कौन करेगा? इधर मेल डिटरमाइन करते हैं, नहीं तो फीमेल डिटरमाइन करते हैं. मेल कहाँ पे डिटरमाइन करते हैं? कहाँ? ह्यूमन में डिटरमाइन करते हैं और ड्रोसोफिला में डिटरमाइन करते हैं. और ड्रोसोफिला का और कैरेक्टर है, अभी हम लोग पढ़ा. और कहाँ पे? ग्रासहॉपर में डिटरमाइन करते हैं एंड कॉकरोच में डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? द लेटर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ वो जो मेल डिटरमाइन करेंगे, तो और कहाँ जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो डिटरमाइन, फीमेल डिटरमाइन करते हैं. कौन सा एनिमल में? ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द फीमेल गेमेट्स. कहाँ पे? जो उसका जेनरेशन होता है वो डिटरमाइन करता है फीमेल का गेमेट से. कहाँ पे? वी हैव सीन इन केस ऑफ फोल्स, बटरफ्लाइज, मॉथ, पिजन, डक्स, बर्ड्स, फिशेस. सो लेटर को याद रखना. वी हैव क्लासिफाइड स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द लेटर, ओके. ह्यूमन में रिप्रेजेंट करते हैं XX एंड XY और ग्रासहॉपर में रिप्रेजेंट करते हैं XX एंड XO, ओके. ये हो गया मेल हेटेरोगेमेट. फीमेल में दूसरा लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Z. अलग लेटर यूज मत करो, साइंटिस्ट ने जो दिया है उसको ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है? अपना हिसाब से मत डाल देना ABCD कोई भी. Alright, so we have completed sex determination. Now what we need to discuss is sex determination in human. We have already discussed, okay, sex determination, but फिर भी let me write human, not man, नहीं तो partiality हो जाएगा. Sex determination in human. So ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आते हैं कभी कभी. Now in case of human, the sex of their offspring is determined by the gametes produced by their parents. जो पेरेंट्स गेमेट प्रोड्यूस करेंगे उस पे ही डिपेंड होके उसका ऑफस्प्रिंग को डिटरमाइन किया जाता है, लड़का होगा कि लड़की होगा. स्पेशली कौन? मेल. क्यों? क्योंकि मेल का क्रोमोसोम में 23 नंबर वाला क्रोमोसोम में 2 अलग क्रोमोसोम रहते हैं, एक X एक Y. अगर मेल में अलग होते हैं 2 क्रोमोसोम तो फीमेल का सब सेम रहेंगे, ठीक है? XX 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 23 नंबर तक. लेकिन मेल का 22 नंबर तक XX होंगे, लेकिन 23 नंबर वाला XY होते हैं.
तो उस पर डिपेंड होके ही उसका ऑफस्प्रिंग को डिटरमाइन करते हैं कि वो गेमेट क्या देंगे। अगर वाई गेमेट देते हैं तो क्या होगा, वाई गेमेट देने से मेन होगा, और एक्स गेमेट देते हैं तो क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नाउ जस्ट वी आर रिवीजन, डूइंग रिवीजन। आई वांट यू टू राइट इट डाउन सेपरेट नोट्स। ओके, पहले तो सेक्स डिटर्मिनेशन का नोट्स लिख लो, उसके बाद इसको सेपरेट नोट्स में बनाना। ठीक है, फॉर 3 मार्क्स के लिए आते हैं, मैं समझा दूंगा। ठीक है, sex determination in human. So we represent in the form of a capital letter XX for female. अच्छा से दिखाता हूँ मेरे को। This is for mother. Let me write mother here. And XY father. सो मदर का XX होते हैं 23 नंबर तक, और फादर का XY होते हैं 23 नंबर में, लेकिन 22 नंबर तक फादर का XX रहेंगे। ठीक है, ये हो गया ना क्रोमोसोम, दे रिमेन इन पेयर, 23 पेयर्स हैं हम लोग का बॉडी में। तो सपोज ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो सपोज फॉर एग्जांपल ये 23 पेयरिंग वाला क्रोमोसोम होते हैं, 23 नंबर वाला पेयरिंग वाला क्रोमोसोम है। इसमें मेन में क्या हुआ, मेल्स में दिस 2 क्रोमोसोम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर XY। 2 क्रोमोसोम अलग रहते हैं 23 नंबर वाला मेल में, लेकिन 22 नंबर तक, 1 से लेके 22 नंबर तक, सपोज ये 22 वाला है, सब मेल में भी तो XX ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन फीमेल में 23 नंबर तक XX रहते हैं, सब सेम होते हैं फीमेल में, ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में, लेकिन मेन में क्या होता है, 22 तक तो XX ही रहेंगे, लेकिन 23 नंबर वाला अलग होते हैं। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि वही डिटरमाइन करेंगे कि उसका जेनरेशन, उसका बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। ओके, ये डिपेंड करेंगे कि वो कौन सा गेमेट दे रहा है फर्टिलाइजेशन का टाइम में। ओके, ये तो लक पे डिपेंड करेगा, हम लोग तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते तुम Y दो, तुम X दो, मुझे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, डायरेक्ट वी कैन नॉट से। सो इट डिपेंड्स ऑन देयर लक, डिपेंड्स ऑन देयर फेथ। ओके, सो वी हैव दिस मदर XX, वी हैव दिस फादर XY. They will produce their gametes. Okay, they will produce their gametes. Now in F1, when we make a cross, the progeny we find, देखो गेमेट्स मदर तो X ही देंगे, क्योंकि उसके पास 2 क्रोमोसोम ही XX है। तो इधर फिर अच्छा से समझने के लिए मैं क्रोमोसोम भी ड्रॉ कर देता हूँ। एग्जाम में ये क्रोमोसोम ड्रॉ मत कर देना, ठीक है, सिर्फ XX और XY लिखना। सो क्रोमोसोम भी ड्रॉ कर देता हूँ। सो एक हो गया X क्रोमोसोम, अलग दूसरा क्रोमोसोम वो भी X क्रोमोसोम है, तो पेयर में रहते हैं ना क्रोमोसोम। तो फादर का एक क्रोमोसोम है X और दूसरा क्रोमोसोम Y होते हैं। तो मदर जब गेमेट प्रोड्यूस करेंगे तो वो X ही देंगे मदर, ओके, क्योंकि दोनों ही X है। लेकिन फादर में 2 अलग अलग है, एक X एक Y। वो X भी दे सकते हैं, Y भी दे सकते हैं, लेकिन वो लक पे डिपेंड करेगा। ओके, वो कौन सा गेमेट प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभी तो कुछ भी नहीं देते, तो क्या ऑप्शन प्रोड्यूस नहीं होते। ऐसे होते हैं केस, स्टेराइल कपल। सो पहले मदर को और पहले फादर को लिखते हैं, ठीक है। ऊपर मदर लिखो या फादर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर में मैं मेल को लिखता हूँ, ठीक है। नीचे में फीमेल को लिखता हूँ, मतलब मदर का क्रोमोसोम। तो इसको क्रॉस करो, क्रॉस करने के बाद ऐसा मिलेंगे हम लोग को रिजल्ट। क्रॉस कैसे करते हैं पता है ना, ये 2 इसके साथ करो, until analysis is done, then you when complete this you cross this with these 2. So we have a probability, हम लोग सिर्फ probability जान सकते हैं कि 50% चांसेस है मेल होने का, 50% चांसेस है फीमेल होने का। वही डिपेंड करेंगे कि वो गेमेट प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कौन, फादर। अगर Y देंगे फादर, अगर उसने Y गेमेट्स दिया तो उसका बच्चा क्या होगा, XY। XY मतलब फादर, फादर मतलब लड़का, लड़का होगा। अगर फादर ने Y गेमेट, Y तो पढ़ लिया, X गेमेट देते हैं, X गेमेट, तो उसका बच्चा क्या होगा, बच्चा, उसका बच्चा XX। XX मतलब फीमेल।
सो ये हो गया उसका ऑफस्प्रिंग सो ऑफस्प्रिंग प्रोबेबिलिटी स्पेलिंग देखना हाँ प्रोबेबिलिटी का 50% मेल एंड 50% फीमेल होने का चांसेस है ठीक है तो ऐसा तुम दिखाओ एग्जाम में फर्स्ट नोट्स लिखना नीचे में एग्जाम्पल देके ऐसा क्रॉस करके ऐसा दिखा दो 3 मार्क्स नहीं मिलेगा तो बोलना मुझे अगर ऐसा लिखने के बाद 3 मार्क्स नहीं मिल लेता है तो एक्सप्लेन कैसे करोगे सर अच्छा से सुनो ठीक है इन ह्यूमन द सेक्स इज डिटरमाइंड wait in human the sex of the offspring is determined by the gametes produced by their parents especially father okay especially father at 23 number of chromosome in case of male it is heterogamete represent in the form of a capital represent the form of a letter XY and it is known as sex chromosome okay when a cross is made between the homogamete of female and the heterogamete of male the offspring that is produced it has a probability of 50% male and 50% female pass हो गया उसको explain करो अपना language में explain करो okay write it down in your copy अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट करते देखो वीडियो को रिपीट करो पहले क्लास में भी बोला है अभी भी बोल रहा हूँ एक दो सेंटेंस अलग हो सकता है बट यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अपना लैंग्वेज में लिखो जो समझा वही लिखो एनसीईआरटी बुक में भी है देखना समझ में नहीं आ रहा है तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन दैट्स व्हाट वी डू ऐसा करो ठीक है नेक्स्ट वी नीड टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम okay sex chromosome and autosomal chromosome so now we will discuss the differences between sex chromosome and autosomal chromosome okay so we have already seen what is sex chromosome and what is autosomal chromosome कौन सा क्रोमोसोम को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं जो 23 नंबर वाला क्रोमोसोम होते हैं पेयरिंग 23 पेयरिंग वाला क्रोमोसोम उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं ठीक है सो 23 को छोड़ के जितना भी क्रोमोसोम होते हैं 1 से लेके 22 पेयरिंग तक उसको हम लोग ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोलते हैं राइट तो एक हो गया ये डिफरेंसेस हम लोग को पहले पता चल गया नेक्स्ट डिफरेंसेस सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग सेक्स क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करते हैं कि उसका ऑफस्प्रिंग लड़का होगा कि लड़की होगी ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो सेक्स डिटरमिनेशन नहीं करते वो अलग कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते हैं अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम ठीक है नेक्स्ट सेक्स क्रोमोसोम हैज two different chromosomes so we call it as a heterogamete so sex chromosome produce heterogamete hetero मतलब दो अलग क्रोमोसोम होते हैं ठीक है दूसरा क्रोमोसोम बेलेग बेलेग के হয় मैं अभी असमिस में बोलूँगा ठीक है so सेक्स क्रोमोसोम की হয় দুটা क्रोमोसोम बेलेग के থাকে ঠিক আছে 23 নম্বৰৰ যোনটো ক্रोमोसोम থাকে এতে দুটা क्रोमोसोम বেলেগ के থাকে এটা হল x এটা হল y আমি এটো লেটাৰ দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো x আৰু y ওকে तो ताके आमी की बोली कहूँ हेटेरोगेमेट बोली कहूँ हेटेरो माने हल बेलेग ऑटोसोमत की হয় जिमानखिनि क्रोमोसोम पेयरिंग থাকে 23 नम्बरলৈকে 22 नम्बरলৈके गुटे क्रोमोसोमखिनि सिमिलर क्रोमोसोम থাকে सब एकेटा क्रोमोसोम हे থাকে তাত বেলেগ বেলেগকে না থাকে তাকে আমি হোমোগেমেট बोली कहूँ ओके सो ऑटोसोमत की হয় गुटे जिमान क्रोमोसोम আছে হেখিনি হোমোগেমেট प्रोड्यूस करे ओके ऑटोसोमे की प्रोड्यूस करे होमोगेमेट प्रोड्यूस करे होमोगेमेट माने दुटा क्रोमोसोम एके থাকে एकेटा क्रोमोसोम এটা বেলেগ বেলেগ কে না থাকে তো আমি কি লেটার দি হে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো
XXXX ओके बुझि पाला नेक्स्ट आमी डिफरेंसेस की जानिबो खोजु सो आमी जे हेटेरोगेमेट বুলি কলো या सेक्स क्रोमोसोमत দুটা क्रोमोसोम বেলেগকে থাকে হেটেरोगेमेट মানে কি দুটা क्रोमोसोम বেলেগকে থাকে বেলেগ কোড হ'ব পাৰে জিনত বেলেগ হ'ব পাৰে বা তাৰ স্ট্ৰাকচাৰ অলপ আগে পিছে হ'ব পাৰে দুটা পেয়াৰিংৰ স্ট্ৰাকচাৰ বা সেন্ট্ৰোমিয়াৰ অলপ আগে পিছে হ'ব পাৰে হিন্দি আধা হৈ গ'ল সো এনেকুৱা থাকে হয়নে আমাৰ ক্ৰোমোসোম দুটা পেয়াৰিংও থাকে তো হেটেৰোগেমেট মানে কি দুটা ক্ৰোমোসোম অলপ বেলেগকে থাকে ঠিক আছে বেলেগকে হয় সো বেলেগ কোড হয় জিনত বেলেগ হ'ব পাৰে বা দা স্ট্ৰাকচাৰ এই দুটা স্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে বাৰু মই অলপ লেন্থ सेम लेन ड्र करूँ तीटा बुझी पाबा सो स्ट्रक्चर किनी ऑटोसोमत की হয় सब गुटेই जिमाने क्रोमोसोम থাকে स्ट्रक्चर किनी অলমোস্ট একেটা থাকে তো হেটেৰোগেমেটত কি হয় 23 নম্বৰৰ যোনটো ক্ৰোমোসোম সেই স্ট্ৰাকচাৰ কিনি বেলেগকে থাকে দুটা ক্ৰোমোসোমৰ স্ট্ৰাকচাৰ বেলেগকে থাকে এই স্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ কোড হয় জিন ভিতৰত জিন আছে যে জিনৰ বেলেগ হ'ব পাৰে বা নহলে তাৰ এই যোনটো শেপ আছে এই দুটা শেপ ইয়াৰ বা সুটি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কম্পেয়াৰত সুটি হ'ব পাৰে সৰু হ'ব পাৰে বা সুটি হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে বা এ সেন্ট্ৰোমিয়াৰ যোনটো এটো গোলকে মাজত যে আছে এটো আমি সেন্ট্ৰোমিয়াৰ বুলি কওঁ ফাৰ্স্ট ইয়াৰত তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছা সেল সাইকেল এন্ড সেল ডিভিজনত ক্ৰোমোসোম যোনটো স্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰোমোসোমৰ এই মাজত যে গোলকে থাকে এই দুটা ক্ৰোমোসোম লগ লগাই ৰাখে হা এটোক আমি সেন্ট্ৰোমিয়াৰ বুলি কওঁ তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িলা সো সেন্ট্ৰোমিয়াৰৰ পজিশন অলপ আগে পিছে হ'ব পাৰে অলপ এই তলত থাকিব পাৰে ইয়াতকৈ তুলনাত এনেকুৱাও হ'ব পাৰে তো সেই তাকে আমি হেটেৰোগেমেট বুলি কওঁ তো আমি x আৰু y দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো হয়নে সো হেতুৱে আৰু ডিফাৰেন্সেस सो प्रथम डिफरेंसेस क्या देखे हैं हम लोग सेक्स क्रोमोसोम will determine the sex of the offspring ऑटोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते लेकिन वो अलग कैरेक्टर्स डिटरमाइन करते कैसा कैरेक्टर मैं नहीं बोलूँगा क्यों नहीं बोलूँगा बोलने से अलग टॉपिक में चला जाएगा ठीक है अलग अलग स्ट्रक्चर जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर सेल में वो है फंक्शन इसका ठीक है so it determines the characters of others except sex characters it determines the characters of other living organism except sex characters done sex chromosome sex chromosome are heterogamete हेटेरोगेमेट मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम रहते हैं कौन सा पोजीशन में एट पोजीशन नंबर 23 so autosomal chromosome are homogamete they are homogamete देखो नाम में ही मीनिंग होते हैं बायोलॉजी में इतना मजा चैप्टर है देखो होमो सेम गेमेट दो सेम गेमेट प्रोड्यूस करेंगे दे आर होमोगेमेट सो 23 नंबर तक सब होमोगेमेट होते हैं ऑटोसोमल नेक्स्ट और क्या बोले थे द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज मे बी different here the position of centromere same 4 पॉइंट लिखना एक पॉइंट खुद से लिखो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका है सो कितना लिखूं मैं
So we have discussed sex determination completely. So we have completed sex determination. Remembering part is sex determination in human. लेटर को याद रखना, कौन सा लेटर से कौन सा एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा क्रोमोसोम नंबर को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, कौन सा नंबर को ऑटोसोमल बोलते हैं, कौन सा हेटेरोगेमेट, कौन सा होमोगेमेट. तो ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है, राइट. वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, इजी टू रिमेंबर. So with this we have completed our sex determination. So next class we will discuss genetic disorder.